But we have done with the light reactions which are taking place in the region of the thylakoids, or we can say is that in the region of the stacks of the thylakoids, or we can say is that the granothylakoid region plus the simple single thread like structure, that is the simple thylakoid region. ठीक है, so दोनों parts ਜਿਹੜੇ ਨੇ involved नेगे. So ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ like arrangements ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि photo system ਸੀ, so दोनों photo system ਜਿਹੜੇ 1 और 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈ thylakoid region और stroma आ गया the stack region, or the basically we can say is that the grana region किस way they are arranged up है and how they will further plays a major role in type of cyclic as well as the non-cyclic type of photophosphorylation. I hope ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ cyclic ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ cyclic ਦੇ ਵਿੱਚ obvious ਹੈ where it's starting from the photosystem 1 and ends towards the photosystem 1, so it runs in a this simple circular way pattern. ठीक है, and where these H positive ions are received by the plastoquinone from that of the stroma region and they has to reaches towards the lumen region of the thylakoid. ठीक है, so ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ move ਕਰਨ ਲਈ so obvious ਹੈ their movement has to be carried out by means of the plastoquinone. ठीक है, so plastoquinone ਦੇ through H positive ions ਜਿਹੜੇ ਆ stroma region ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ lumen region ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ H positive ion ਦੀ concentration ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ. that will lead to the activation of the ATPase complex which will allow the movement of the H positive ion towards the outer side, that means towards the stroma region. ठीक है, which will lead to the generation of the ATP which is the main source of the energy. And same in the case of non-cyclic ਦੇ ਵਿੱਚ same ਆਪਣੇ ਕੋਲ like here is the production of the NADPH as well as the H positive ions which are released from the this non-cyclic pattern. They has reaches towards the ATPase complex like here, here, like here. So H positive ions ਜਿਹੜੇ ਆ which are received from the hydrolysis of water as well as from the plastoquinone, they are moving towards the lumen region where they will lead to the increasement of the H positive ion concentration and they has to move towards the stroma region by means of the ATPase complex. ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. And plus there is also a generation of the reducing power in form of NADPH. So this is the basic difference between the cyclic as well as the non-cyclic type of photophosphorylation. And these two photophosphorylations which will lead to the generation of these two main products, that is the NADPH as well as the ATP. ठीक है, so ये दो main major products हैं release होंगे as well as there is a releasement of the oxygen which has to be removed out, whereas the ATP as NADPH they are further utilized for the carbon assimilation. So carbon assimilation ਲਈ जो next process आंदा after that of the light reaction that will be followed towards the dark reactions. ठीक है, so dark reactions basically occurring in the region of the stroma. ठीक है, सो स्ट्रोमा रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड और द कार्बन कंटेंट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ਸ਼ੂਗਰਸ. ਸੋ ਸ਼ੂਗਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਹਾउ these two main products ATP as well as the NADPH they are further utilized in the process of cyclic type of cyclic आ गया in case of different types of cycles, whether the Calvin cycle, whether the C4 cycle, whether the C2 cycle, like in that way how they are using that particular these byproducts for the generation of the sugars. ठीक है, so ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. And these sugars are further utilized for the cellular respiration, cellulose formation, starch formation as well as the other organic compounds. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. So dark reactions or light reactions, the combination case with like here the light reactions which will lead to the generation of the ATP from that of the water as well as the ADP and inorganic phosphate. They are generating the ATP as well as NADPH and plus there is a releasement of the oxygen in the presence of light as well as the chlorophyll, and these two are further connected towards the carbon reactions, or we can say is that the dark reactions. ठीक है, where they are added with that of the carbon dioxide as well as water which will lead to the generation of the sugars or the carbohydrates. ठीक है, and plus there is a releasement of the oxidized form of NADPH, that is the NADP positive. ठीक है, so that this phase, this right hand side phase is basically called to be as a dark reactions. ठीक है, so इस ਦੇ ਵਿੱਚ first ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ point ਆਂਦਾ ਜਾਂ first cycle ਜੋ ਆਏਗਾ that is the Calvin cycle or the C3 cycle ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ reductive pentose phosphate cycle. reductive pentose phosphate cycle इसलिए किया जाता है because there is a reduction of the pentose sugar has to be taken on. ठीक है,
So pentose sugar the reduction take place होगी, which will further carried out led to the formation of the sugar content, or we can say the glucose as well as the starch or the sucrose content, ठीक है. So is it through कह लो कि पेंटोज शुगर ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ that will lead to the generation of these kind of simple sugars as well as the complex sugars. ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. C3 ਹੈ obvious as the first ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, that is the 3-phosphoglyceric acid, that is this one 3PGA, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 3PGA in the sense 3-phosphoglyceric acid, ਠੀਕ ਹੈ. So this is the first main stable compound which is formed during the time of the carbon fixation by means of the Calvin cycle, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ that is the carbon fixation. ਓਕੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ IUBP ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰੂਬਿਸਕੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ. ਸੋ ਰੂਬਿਸਕੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ which will lead to the generation of the ribulose 1,5 biphosphate, ਠੀਕ ਹੈ. Then this ribulose 1,5 biphosphate, it will lead to their reduction उसकी take place होगी in the case of reduction phase, ठीक है, where this ribulose 1,5 biphosphate will lead to the formation of first stable compound, that is the 3-phosphoglyceric acid, and this 3-phosphoglyceric acid is undergoing into the reductive phase, ठीक है. फिर ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 3-phosphoglyceric acid ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਵਾ glyceraldehyde 3-phosphate, ਠੀਕ ਹੈ, which is the main intermediator for the formation of the carbohydrates. So ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ from that of the 3-phosphoglyceric acid forming the glyceraldehyde 3-phosphate, which will lead to the generation of the carbohydrates, ठीक है. So that is the third step. And after that, this carbohydrate formation, or when the glyceraldehyde 3-phosphate is used in the formation of the carbohydrates, then they are further utilized for the regeneration process. So regeneration process किसके through होएगा? By means of ATP, which is received from the light reactions, ठीक है. So ATP is which utilize होएगा, where this ATP will lead to the movement towards the regeneration process, ठीक है, where this ATP will combine with the glyceraldehyde 3-phosphate, which will lead to the formation of the ribulose 5-phosphate from that of the ribulose 1,5 biphosphate. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ribulose 1,5 biphosphate ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ribulose 5-phosphate ਜਾਂ monophosphate ਦੀ formation ਹੋਏ, which will further move towards the carbon fixation process, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਹੈ that is the fixation of carbon dioxide, ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਔਨ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, we require the main source which will lead to the absorption of that carbon dioxide. So that source is basically the ribulose 5-phosphate, ठीक है. So ribulose 5-phosphate the through कह लो के it will lead to the generation of the ribulose, sorry in between एक step रज मिस हो गया, that is the ribulose 1,5 biphosphate. और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ. ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇਗੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਸ 5-phosphate ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਰਾਈਬੋਸ 5-phosphate ਹੈ which is the main aldehydic sugar, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡਿਕ ਵੈਦਰ ਦਾ ਕੀਟੋਨਿਕ ਵਨ. ਸੋ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲਡੀਹਾਈਡਿਕ ਸ਼ੂਗਰ. ਔਰ ਇਹ ਐਲਡੀਹਾਈਡਿਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਕੀਟੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਰਾਈਬੋਸ 5-phosphate ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਵਾ ਰਾਈਬੁਲੋਸ 5-phosphate ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋ pentose isomerase enzyme. So isomerase enzyme the through isomerase enzyme काम की करता है, it will lead to the conversion of the aldehyde sugar towards the ketonic sugar, ठीक है. So इस दे विच यदि conversion take place होगी, and after that this ribulose 5-phosphate, this will undergo the another reaction, that is a kinase reaction.
या phosphoribokinases reaction भी कह सकते हैं with that of this particular enzyme. So phosphorylation reaction basically occur ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ phosphate group ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ at the 5th carbon, but ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ by means of this kinase enzyme, that is the phosphoribulose kinase enzyme, this enzyme will lead to the addition of the one phosphate group towards the first carbon of ribulose 5-phosphate, okay, by means of ATP as well as a phosphoribulose kinase enzyme that will lead to the formation of RUBP, that is ribulose 1,5-biphosphate. So this is the structure of the ribulose 1,5-biphosphate. In between मेरे ख्याल slide पानी रहेगी मेरी. So normal this 5-phosphate तो अपने कोल बन जाएगा 1,5-biphosphate. So at the first carbon also and at the 5th carbon also there is the attachment of the phosphate group. So पहला as it is attachment होगी towards the 5th carbon, then towards the first carbon. ठीक है. सो इन्ना दी इस वे दा एडिशन होगी. सो अपना मेन जिहड़ा कंटेंट है या मेन सोर्स है विच विल हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ द राइबुलोज 1,5-biphosphate. So ribulose 1,5-biphosphate as it is directly नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ने कंज्यूम कर पाता हैगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ एंजाइम ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, that is the Rubisco enzyme. So this Rubisco enzyme will help in the fixation of the carbon dioxide. First, this Rubisco enzyme will convert the ribulose 1,5-biphosphate into the enediol form. Enediol form ਕੀ ਹੈ? Like ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ कि जी ये कीटोनिक शुगर है राइबुलोज 1,5-biphosphate, ठीक है, एंड एट दिस पर्टिकुलर कार्बन सेकेंड कार्बन एंड प्लस ऑन द थर्ड कार्बन इतने की करता है इन्हें इन ग्रुप की फॉर्मेशन की है बाय मीन्स ऑफ द रुबिस्को एंजाइम. इन ग्रुप किदा कि लाइक देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द सेकेंड कार्बन एज वेल एज द थर्ड कार्बन, एंड दिस हाइड्रोजन फ्रॉम द थर्ड कार्बन इट इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन. सो इट विल हेल्प इन द transportation of the H positive ion towards this oxygen and they will lead to the formation of the hydroxyl group. ठीक है. सो दैट्स वाई ਇਹਦਾ नाम रखा गया enediol. सो इन मतलब कि डबल बॉन्ड, डायोल ऑब्वियस है, देयर इज द 2 alcoholic group are present in the ribulose 1,5-biphosphate. So that will lead to the formation of the enediol form of this. ठीक है. then enediol form बन गई. आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड will enter. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली इस enediol फॉर्म के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय मीन्स ऑफ द सेम रुबिस्को एंजाइम. ठीक है. हुन एंजाइम ने की करना, दैट विल अलाउ द अटैचमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड सेम ऑन द सेकेंड कार्बन. सेकेंड कार्बन ते की होएगा कि अपने को कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट हो जाएगी. लाइक हुन अपने को जिवें आ सेकेंड कार्बन दे की सीगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप सी और प्लस डबल बॉन्ड इत्थे एग्जिस्ट कर रही सी, बट होया कि हुन here this COO basically the COO ना CO2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ COO ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨੋਰਮਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਦਿਸ CO will attach towards the second carbon and hydrogen has to release from this oxygen towards this carboxyl group. ठीक है. सो इत्थे आके COOH ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी. ठीक है. एंड दिस हुण अपने कोल इत्थे की है सेकेंड कार्बन ते हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लग्या होया वा ते प्लस कार्बोक्सिल ग्रुप भी है. ऑन द थर्ड कार्बन देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द कीटो ग्रुप. सो इत्थे अपने कोल नाम की बन जाएगा, दैट इज़ बीटा ऑक्सो एसिड और या जिन्हों आप कह सकते हैं 2 कार्बोक्सी दिस कार्बोक्सी 3 कीटो दिस कीटो 1,5-biphosphoritol. टोल इसलिए बिकॉज हेयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द एल्कोहलिक ग्रुप. सो ओल पीछे लग जाएगा फॉस्फोराइबेटोल, नहीं तो राइबुलोज होना सीगा जिवें अपने को पहला नाम सीगा दिस वन दिस राइबुलोज. ठीक है. बट इत्थे राइबेटोल आ जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है. एंड आफ्टर दैट विद द सेम रुबिस्को एंजाइम दिस
2-carboxy 3-keto 1,5-biphosphorybital, which is the most unstable compound. सो ये की है, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करता है, सो यदी डिसोसीएशन बहुत ईजिली हो जाती विद दैट ऑफ द रबिस्को एंजाइम. सो यदी की है पार्टीशन टेक प्लेस हो जाएगी, 3 कार्बन वाले ऊपर रह जाएंगे, 3 कार्बन वाले नीचे रह जाएंगे. सो दे विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिकली द 2 molecules. सो 2 molecules अपने को इत्थे 3-phosphoglyceric acid दे अपने को फॉर्म होंगे किदा, लाइक हियर वी आर हैविंग so this up to this it includes the 3 carbon 1 2 and 3. These 3 carbon will lead to the collaboration to forming the CH2OP. ओमे आ गया CHOH means ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ H obvious है कि राजे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ H ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਦਾ CHOH this portion, and this carboxyl group will act as the main third carbon. ठीक है, so ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮਿੰਗ ਹੋਏ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ it will be like that 1 2 3. ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ that will be of the carboxyl. obvious ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਬਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then this is the second, this is the third. So it will lead to the formation of 3-phosphoglyceric acid. सो ग्लिसरिक एसिड है 3 कार्बन वाला वा. ग्लिसरॉल का तुहानू फॉर्मूला शायद याद ही होएगा, दैट इज CH2OH हुंदा वा, दैन सेम CHOH, दैन फर्दर CH2OH. ठीक है, सो इस जगह ते की है कि फर्स्ट वाले दे फॉस्फेट ग्रुप है, सैकेंड वाला एज इट इज CHOH है, बट जो थर्ड वाला CH2OH है उसकी जगह ते की है कार्बोक्सिल ग्रुप है. सो दैट्स वाई इट इज़ नेम टू बी एज अ 3-phosphoglyceric acid. ठीक है, सेम ਜਿਹੜੇ लास्ट वाले बच गए, here also there is a presence of this carbon, this one, the first one, this one will act as a main where it will receive this hydroxyl group from the water, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ water ਜਿਹੜਾ ਵਾ it dissociate ਹੋ ਜਾਂਦਾ into the hydroxyl ion as well as the H positive ion. So H positive ion ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ at the second carbon where it forming the CHOH, whereas another hydroxyl group from the water will move towards this carboxyl group. ठीक है, लोअर पोर्शन वाला. सो उत्थे अपने को की बन जाएगा COOH, बाकी एज इट इज़ ओमे ही रहेगा. ठीक है, और प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी ओमे रहेगा. सो इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ 3-phosphoglyceric acid. So that means from the one molecule of 2-carboxy 3-keto 1,5-biphosphorybital it forming the 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid, which is the main first stable first stable compound. Clear है जी? So this is the main first stable compound which is further plays a major role in the reductive phase where it will lead to their reduction. Clear?